Okay, let us start our today's class. Okay. So today we will complete about paging concept, and we will see the segmentation, and we will see the difference between the paging and segmentation. Segmentation is also a mechanism to store memory for a process. So in yesterday class, we are seeing about the size of page table. Size of the page table, however, the part of the process which is being executed by CPU must be present in the main memory. As we know that the process whose want executed, it should be in the main memory. The page table must also be present in the main memory. Definitely, we will find out the page. So we will see the page table, and page table will also in main memory. All the time, because it has entry all the pages, because all the pages are stored in the page table, as we know that. So we find the page from the page table, and from the page table we got frame number, that is the actual memory location. So the size of the page table depend on the number of entry in the table and the byte stored in one entry. So look at this, size of the page table is also important. If we have number of and lots of pages, then it may take too much time to access a page. So a small page table is suitable to stored in the memory, but if we have a large number of pages and we have the large size page table, that may cause a slow response time. So look at this, how we calculate the size of page table. We have already seen this example yesterday, but once again we are repeating. Logical address 24 bits, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 to the power 24 बिट्स. ये क्लियर है. अगर मेरे पास बिट्स अवेलेबल है, देन लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 to the power 24. जो भी बिट है उसको 2 की पावर में ले लेंगे, वी विल गेट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस. ना अब मेरे पास पेज साइज 4 KB है, तो मैं बाइट में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 KB इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट. तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, तो वी विल कैलकुलेट पेज साइज इन वाइट 4 KB 2 to the power 12 बाइट. पेज ऑफसेट इज गिवन 12. द नंबर ऑफ बिट्स इन ए पेज, एक पेज में कितनी बिट होंगी. द कैलकुलेशन डन बाय द फॉर्मूला लॉजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट. लॉजिकल एड्रेस वी हैव 24 बिट minus page offset, so we got 12 bit. Now number of page, how many page we required, 2 to the power 12 page. और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वापस हमारे पास आ रहा है 4 KB का. इसको वापस से कन्वर्ट किया तो 4 KB में हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस निकल के आए. पेज टेबल की एंट्री हम बोल रहे हैं कि एक पेज टेबल में एक पेज एक बाइट लेगा. तो नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास 4 KB है, तो मेरे पास जो पेज टेबल की साइज होगी वो 4 KB की आएगी, क्योंकि एक पेज एक बाइट ले रहा है. तो 4 KB पेज है हमारे पास, तो 4 KB की पेज टेबल रहेगी. ये बहुत स्मॉल है. जब एक प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन में आती है तो मिलियंस ऑफ पेजेस हमारे क्रिएट होते हैं, मिलियंस ऑफ पेजेस. अब वो मिलियंस ऑफ पेजेस स्टोर्ड होंगे पेज टेबल में, दे विल ऑक्यूपाई द मेमोरी, and millions of page. Remember, to find some pages from the millions of pages, it will take too much time. So the response times can be increase of a process. So this is a drawback के पेज टेबल और पेजिंग कंसेप्ट का. पेज टेबल में अगर साइज कम हो तो एफिशिएंट है, अगर पेज टेबल की साइज बड़ी हो तो इट इज अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू एक्सेस. एक्सेस करने में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा. लुक एट दिस, दिस इज द लॉजिकल व्यू ऑफ अ
page table, main logical memory and the main memory. These are the pages. The page 0, page 1, page 2, page 3. This is the page table. ये जो पेज हैं आपके पेज टेबल में आपको कहाँ कैसे हमारे स्टोर्ड हैं. तो दिस इज द पेज टेबल इंडेक्सिंग. ये हमारा पेजेस की. फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, करस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर मिल रहा है हमारे पास, फ्रेम नंबर. और इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली मेमोरी में हमारे पास पेजेस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पेजेस फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है. तो सिमिलरली इफ वी फाइंड आउट, लुक एट दिस, कि मेरे पास दिस इज व्हाट, एक पेज में 4 हमारे पास बिट हैं, लाइक ए बी सी डी. एक पेज 4 वैल्यू कंटेन कर रहा है और 4 पेज हैं, तो टोटल हमारे पास 16 वैल्यूज आ रही हैं. ये हमारी पेज टेबल है कि पेज 0 को फ्रेम नंबर कौन सा अलॉटेड है, 5th नंबर का. पेज 1 को फ्रेम नंबर कौन सा अलॉटेड है, 6 नंबर का. सिमिलरली पेज 2 को फ्रेम अलॉटेड है 1 नंबर का और पेज 3 को अलॉटेड है 2 नंबर का. और जब हम फिजिकल मेमोरी में जाएंगे डेटा, तो हमारे पास कुछ जनरेट होगा डेटा. तो ये एक्चुअल साइज पेज की, एक पेज में कितनी वैल्यूज, ठीक है. इस पेज को पेज टेबल में कौन सा फ्रेम नंबर दिया और उसके करस्पॉन्डिंगली फिजिकल मेमोरी में हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए. तो ये एक मैपिंग होती है जिनको हमें करना पड़ता है. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द एग्जांपल रिलेटेड विद द मैपिंग, so we will not spend too much time. Once again, look at this. This is the another. The hardware implementation of page table can be done by using dedicated register. How we will implement the page table? We will implement the page table through the hardware implementation, and it is done by the dedicated register. But the uses of register for the page table is satisfactory only if the page table is small. We have already told you register is the smallest unit of the memory. So if the page table is small, then it is a satisfactory. But if the page table contain large number of entry, then we can use the TLB concept. TLB is what? Translation look aside buffer, which are a special, a small, fast lookup hardware caches. This is also a space, memory space, but in terms of the buffer. Translation look aside buffer, a special, a small, fast lookup hardware cache. If page table contain large number of entry, then we use the TLV. TLV is associated with high speed memory. To access the number of page with high speed, so we required a high speed memory mechanism, and TLV support high speed memory mechanism. Each entry in TLV consists of the 2 parts. One is the tag and another is the value. When this memory is used, then an item is compared with all tags simultaneously. If item is found, then the corresponding value is the return. Look at this an example how we can implement a TLB. So when a CPU generates a logical address which is divided into 2 parts, page number and the offset. So initially page find in TLV. Here initially page will find in the TLV, that is called cache, high speed memory hardware cache. So initially we will find the page number in the cache, page and cache. If page is find, then we go in this. This is called the TLV, translation look aside buffer. If we got the frame number corresponding to a page number, then this is called what? TLV hit. This is called the TLV hit. If we not found the page in caches, then we go in the page table. मैं कहाँ जाऊंगा? पेज टेबल, जो मेरी एक्चुअल पेज टेबल है. मतलब अब मेरे पास 2 चीजें हैं, वन इज द पेज टेबल एंड अनदर इज द TLV.
TLB is a catching memory space or translation look aside buffer which is provided to store the data. तो अगर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज वी हैव, तो उनमें से सिलेक्टेड पेजेस की एंट्रीज मेरे पास TLB में रहेगी. जो पेजेस फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, जो हाई प्रायोरिटी पेजेस हैं, उनकी मतलब यहां से हम पेज टेबल से कुछ वैल्यूज को हम यहां पर स्टोर करा देंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं TLB में. Whenever CPU will produce the logical address, we will find out the page in TLB. If we got the page frame number corresponding to page, then we say TLB hit. If we doesn't found the page in the TLB or page in the cache, then we go the page table to find the proper page in memory. तो यहाँ से आपको एक TLB hit और TLB miss, ये दो वर्ड आपको रिमेंबर रखने हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, कि व्हाट इज द TLB hit and what is the TLB miss. If we found the page in TLB, then that is called the TLB hit. If we doesn't found the page in TLB, that is called the TLB miss. And जब TLB miss होता है तो उस कंडीशन में हम फ्रेम को पेज टेबल में फाइंड आउट करते हैं, और अगर TLB हिट होता है तो उस कंडीशन में हम फ्रेम नंबर को TLB में फाइंड आउट करते हैं. मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ एक स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द TLB. सो हमारी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट हो जाती है. तो दिस इज द रोल ऑफ द TLB. पेज टेबल में से कुछ पेजेस जो सिलेक्टेड हैं या फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस हैं, हम उनको TLB में स्टोर कर देंगे. तो इनिशियली वी विल फाउंड द पेज इन TLB. If available, then we go for the physical address. If we don't found, then we go in main page table. तो वहां तो हमें फ्रेम नंबर मिलना है, और जब फ्रेम नंबर हम मिलेगा तो हम फिजिकल एड्रेस के लिए जा पाएंगे. तो दिस इज अ बेसिकली TLB एग्जांपल. Now come to the another topic that is called the segmentation. In operating system, segmentation is a memory management technique in which the memory is divided into variable size part. Look at this. Paging is the fixed size memory allocation, where the segmentation is what? It is a variable size part. Memory is divided into the variable size. पेज में हम क्या कर रहे थे, फ्रेम में हमने ब्लॉक किया और फ्रेम साइज और पेज साइज दोनों सेम रखी थी. बट इन केस ऑफ द सेगमेंटेशन इट इज अ वेरिएबल इन साइज. ईच पार्ट इज नोन एज ए सेगमेंटेशन व्हिच कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस. सो in that case, in case of segmentation, memory is divided into the number of parts and each part can be vary in the size. And whenever a process want a memory, then we allocate a segmentation in case of the paging. Detail about each segmentation are stored in a table called as a segmentation. Just like a page table where the all the information related with pages is stored in the page table, the same thing applies here. All the information related with the segment is stored in the segment table. Segment table is stored in one or many of the segment. A segment table is stored in one or many of the segment. Segment table contain mainly two information about the segment. One is the base and another is the limit. Base is what? It is the base address of the segment, and the limit is what? It is the length of the segment. Look at this. This is a view, logical view of the segmentation. ये एक लॉजिकल व्यू में अब आपको दिखा रहा हूं यहाँ सेगमेंटेशन के. सेगमेंटेशन होता क्या है? कि सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी स्पेस जो कि अलग अलग साइज में डिवाइडेड है. लुक एट दिस कि आपके पास है लॉजिकल एड्रेस सेगमेंटेशन 0, 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट इज द साइज? अलग अलग सेगमेंटेशन की अलग अलग साइज है. फॉर एग्जांपल 0 सेगमेंटेशन बेस एड्रेस इज 0 एंड लिमिट इज द 600.
the size of the segmentation. Similarly segmentation 1 बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है 250 से एंड उसकी साइज कितना है 800. So look at this in memory when we allotted segmentation to the actual in the memory. So this is what, this is the segmentation 0 which will start from the 500, and what is the limit is the size of the segmentation is 600, it will terminate at the 1100. The same thing is for the segmentation 1, the base address is the 2500, so it will start in the main memory 2500, and what is the limit, the size of this segmentation is the 800, so it will terminate at 330. तो इस तरीके से segmentation को हम memory allocate करते हैं, and only two things is required to segmentation: base address and the limit. So segmentation, basically segmentation is a logical unit such as the main program, procedure, function, method, object, local variable, common block, stack, symbol, array. segmentation में कुछ भी हो सकता है. Basically segmentation ने आपको एक portion दिया है, so उस portion में आप अपने प्रोग्राम रख सकते हो, प्रोसीजर रख सकते हो, फंक्शन, मेथड, anything we can store in a segmentation, and this segmentation will be stored in a actual memory location. So basically a program is a collection of segment. Main memory scheme support user view of the memory, and a program is a collection of the segmentation. ये एक प्रोग्राम है मेमोरी में जो कलेक्शन ऑफ सेगमेंटेशन है, और ये कलेक्शन ऑफ सेगमेंटेशन वन बाय वन मेमोरी में जाएंगे, और एक सेगमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो दीज आर द लिस्ट एंड सम अदर आइटम कैन आल्सो बी एडजस्ट अपार्ट फ्रॉम दीज लिमिट दीज इन दी लिस्ट. इस लिस्ट के बाहर भी कुछ आइटम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल यूनिट. बेसिकली सेगमेंटेशन इज ए लॉजिकल यूनिट. तो कुछ भी हो सकता है सेगमेंटेशन में. वेरिएबल साइज के होते हैं एज कंपेयर फिक्स साइज. segmentation, so there are two types of segmentation. One is the virtual memory segmentation and another is the simple segmentation. Virtual memory segmentation, that means each process is divided into number of segments, not all which are resident in at an one point in a time. तो when virtual memory segmentation जब हम देखेंगे, जब हम virtual memory का concept पढ़ेंगे, then we will see the virtual memory segmentation. Right now we are looking only simple segmentation, where each process is divided into number of segments, all of which are loaded into main memory at runtime. Through not necessary contiguous. Definitely कि ये जरूरी नहीं है कि सारे segment continuous form में हो. एक process number of segmentation में divide हो सकती है, depend on the size of the segmentation and required memory by the process. कि एक process को कितनी memory चाहिए and how many segments we have. So this is the, it will decide कि प्रोसेस किस तरीके से डिवाइड होगी सिंपल सेगमेंटेशन में. और जो मैंने आपको लॉजिकल व्यू दिखाया था, दैट इज कॉल्ड द सिंपल सेगमेंटेशन व्यू. तो लुक एट व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. द पॉइंट इज व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. So till now we are using paging as our main memory management technique. Paging is more close to the operating system rather than the user. It divides all the process into the form of page, regardless of the fact that a process can be have some relative part of the function which need to be loaded in the same pages. जो हम यूज कर रहे हैं मेन मेमोरी में, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है पेजिंग का, बिकॉज द पेजिंग इज मोर क्लोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जो पेजिंग की जो टेक्निक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लोज है, ना कि यूजर के. Operating system doesn't care about the user view of the process. हम किस व्यू से प्रोसेस को देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैटर नहीं करता है. उसने तो जो कॉन्सेप्ट सेट करके रखा है, पेज साइज जितने करके रखे हैं, उसी पेज साइज में उस प्रोसेस को लेकर आएगा. तो it may divide the same function into different pages, and those pages may or may not be loaded at the same time into the memory. It decreases the efficiency of the सिस्टम. तो अब यूजर व्यू
से मतलब नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो अपना व्यू देखता है पेजिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी डिग्रेड होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने हिसाब से जब काम करता है तो इट मे लीड टू द डिक्रीज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। So it is better to have segmentation, which is divide the process into segment. Each segment contain the same types of functions, such as the main function can be included in one segment and the library function can be included in the other segment. अब जो segmentation होते हैं वो यूजर व्यू और यूजर के क्लोज होते हैं एज कंपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ये हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है कि यूजर की प्रोसेस और यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है एज करस्पॉन्डिंग अ प्रोसेस, तो वी कैन डिवाइड दैट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोसेस और अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द यूजर। तो जब इस तरीके से हम वर्क करते हैं तो हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो दैट इज द important thing is segmentation close with the user and paging is close with the operating system. It is might be possible if page not in the page table, then to load pages from secondary to main memory and again to transfer the pages from main memory to secondary. So it may lead to decrease the efficiency of the system. To avoid this types of happening, segmentation come in the picture, which is provide the variable size and it is the provide a different types of the functionality. Look at this. This is how we will implement the segmentation. Just like a paging. आप देखेंगे कि जो paging का concept था उसी की तरीके से हमने segmentation को भी implement किया है. Whenever CPU generates the logical address, which is divided into segment number and the offset. दो पार्ट में segment number find in the segment table. segment number कहाँ find होगा? segment table में find होगा, जहां पर कि हमें क्या मिलेगा? बेस एंड लिमिट. segment table is divided into two part. Look at this. segment table is divided into two part, base and limit. ठीक है. the offset यहां से सीधा जा रहा है. ठीक है. offset और लिमिट में अगर डिफरेंस आया, ऑफसेट और लिमिट की लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है और ऑफसेट आपका लो है, ठीक है, लिमिट बड़ा है ऑफसेट लो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, देन वी विल गो फॉर द मेमोरी. और अगर आपकी ये कंडीशन के ऑफसेट एड्रेस इज हायर एज कंपेयर द लिमिट, so we cannot find that address in the memory, so it is a invalid address. It will become in the invalid address. So how we will implement segmentation table? This is the diagram to implement segmentation table. कि आपको यहाँ से क्या मिलेगी? लिमिट मिलेगी, यहाँ से ऑफसेट. लिमिट और ऑफसेट दोनों को प्लस करके we will find out the segmentation in a main memory. Base address you will find the base address कि कहाँ से आपका main memory start होना है और कहाँ पर ये क्लोज होगा. तो दिस इज अ सिंपल आर्किटेक्चर और टू क्रिएट अ सेगमेंटेशन टेबल इन अ मेन मेमोरी. द एडवांटेज ऑफ द सेगमेंटेशन, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डन बाय segmentation because we use the variable size of the segmentation. So जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही सेगमेंटेशन क्रिएट करेंगे. तो नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कहीं कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता. एवरेज सेगमेंटेशन साइज इज लार्जर देन द एक्चुअल पेज साइज. जो एवरेज सेगमेंटेशन साइज होगी वो बड़ी हो सकती है हमारे जो पेज साइज से है. लेस ओवरहेड, डेफिनेटली एक सेगमेंटेशन में हम नंबर ऑफ प्रोग्राम रख सकते हैं. तो ये ओवरहेड बताता है कि जहां पर कि वी हैव मिलियंस ऑफ पेजेस and each pages will be stored separately in the page table. तो अब आप देखिए कि जब मिलियंस ऑफ पेजेस हैं तो हमने उनको सेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया है. जो प्रोसेस मिलियंस ऑफ पेज रिक्वायर्ड थे और हर पेज की एक इंडिविजुअल एंट्री थी, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर सेगमेंटेशन में कन्वर्ट किया और हमने उनको एक लिमिटेड कर दिया. तो लेस ओवरहेड
provided by the segmentation. It is easier to relocate segmentation than entire address space. Disadvantage is it can have external fragmentation. That is the disadvantage of the segmentation. It is difficult to allocate contiguous memory to variable size partition. पार्टीशन का साइज अलग अलग होता है तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है एंड कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम बिकॉज इट इज क्लोज टू द यूजर. आप नीचे अटेंडेंस कंपाइल कर लीजिएगा. And this is one, what? This is the difference between the paging and segmentation. What is the non-contiguous memory allocation? Non-contiguous memory allocation. Paging divide program into fixed size. Segmentation divide program into variable size. OS is responsible, compiler is responsible. Paging is faster than the segmentation. Segmentation is slower than the paging. Definitely segmentation close with the user where the paging is close with the operating system. So paging is the faster as compared to the segmentation. Paging closer to the operating system, segmentation closer to user. It suffer from the internal fragmentation, it suffer from the external fragmentation. Logical address divide into page number and offset, and logical address divide into segment number and the segment offset. So these are the difference between the paging and segmentation, but both are the same in general because both are providing the memory for a process. So this is the paging and segmentation concept. Paging is the fixed size variable and the segmentation is the variable size memory allocation mechanism. And to allocate a segmentation, segmentation table divided into two parts. One is the base and the limit. And offset match with the limit. If offset is higher than the limit, then this is an invalid address. And offset is under the limit, then we go for the memory for a segmentation. And the rest of the mechanism is the same, just like a paging of the segmentation. So segmentation and paging, I think it is the clear to all of you. If you have any doubt, then you can ask. Yes.